everyone. Am I audible and visible to you? Okay. So myself, Dr. Shital Pipaliya, your faculty for Physiology. Welcome on the platform of Unacademy. I did MD Physiology from MP Shah Medical College and I'm educating MBBS and MD students. I have teaching experience of more than 17 years and I am one of the experienced faculty for integrated curriculum teaching. NEET PG free test calendar is there for March week 4. It's available. Hello Ali. You can use the code Shital10 to unlock free live class. NEET PG 2022 All India mock test is there on 27th of March. Launching previous year question bank. Launching first MBBS professors, your path cracking towards MBBS and next. Doubt clarification series is there. So you can use the code Shital10 to unlock free live test. Let us go through some subscription details of Unacademy. With Plus subscription, you can have access to both live as well as recorded classes. You can learn from the topmost educators of India. You can learn from topmost educators of India. You can compete in live tests and quizzes. You can study on the device of your own choice. You can have access to the question bank having more than 25,000 questions in it. Yes, Ali, it's a free access. Yes, it's a free access. Iconic subscription, Unacademy and Prep Ladder. With Unacademy, you will have various resources like well-structured live batches, recorded classes, question bank, and many more. Unacademy and Prep Ladder. With the Prep Ladder, you will find clinical and integrated essentials, video lectures from Dream Team, rapid revision and snapshot, and many more. So both are unique in its own way. Whatever is best suitable for you, that you can choose. These all are toppers of FMG December 2021. You can congratulations to all the toppers from Unacademy. Now Unacademy came up with some special class feature. Now classes will be highly interactive. There will be a poll for the learners for their better understanding. You can raise a hand and interact with your educator. You will never miss a class because Unacademy will send you regular notifications. Lecture notes are available. You can download it and you can even have access to the recorded sessions. You can attend the class from any time, anywhere. NEET PG 2022 high yield theory revision batch is there. Duration is 1.5 month. FMG 2022 high yield revision and MCQ batch is there. Duration is 2 month. NEET PG subscriptions, iconic subscription, plus subscription and light subscriptions are available with different duration and different prices. So previous year question bank is launched. Launching auto daily practice papers are also there. Topic wise questions are available. So you can attempt these tests. Now come to today's topic of respiratory system, lung volumes and capacities. Okay, let us understand this. See, lung volumes and capacity, they are important component of a pulmonary function test. अगर आपको pulmonary function test करते हैं जब हम, तो we usually look
for lung volumes and capacities because they will give you idea about the functional state. Functional state के बारे में idea देता है about of the lungs. Okay, so they if we broadly divide कितनी types है lung volumes and capacities की, तो दो types हैं. One is static lung volumes and capacity, another one is dynamic lung volume and capacity. See, the word itself says static volume and capacity means here time factor is not involved. Okay, here time factor is not involved. Then another one is dynamic lung volume and capacity. Dynamic lung and volume and capacities, here time factor is involved. Okay, time factor is involved. So static means doesn't change much with time. Okay, and dynamic means here time factor is involved. Now come to the first one, that is static lung volumes and capacity. See this one, static lung volumes and capacity, where time factor is not involved. Okay, so there are different lung volumes and different capacities. Different lung volumes and different capacities are there. Let us go through this all one by one. Tidal volume, then inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, residual volume, and closing volume. Then different capacities are inspiratory capacity, expiratory capacity, vital capacity, functional residual capacity, and total lung capacity. So these all are capacities. Capacities are the combinations of the volumes, you can say. Volume और capacities में क्या difference है? तो अगर आप volumes जो है उसको when you add on, then you will have an idea about the capacities. Okay, let us go through all one by one. See, this is the graph image showing अगर इसको आप लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, अगर हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करें और उसको ग्राफिकल रिकॉर्डिंग करें, ओके, सो ग्राफिकल रिकॉर्डिंग विल लुक लाइक दिस. ओके, इट विल लुक लाइक दिस. सी दिस वन, एक रेड लाइन है जैसे ये. सी दिस आर इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी फेजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी साइकिल. ओके, सी दिस वन इज द टाइडल वॉल्यूम. Tidal volume, see the word itself says, मतलब कि volume of air. Okay, volume of air which can be inspired and expired with quiet breathing. मतलब कि आप जो at rest जो रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग पैटर्न होता है उसमें कितना वॉल्यूम इन एंड आउट होता है, ओके, फ्रॉम द लंग्स, उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. ओके, so this is the instrument, this is Hutchinson spirometer. ये Hutchinson spirometer है. From this instrument you can see the instrument carefully. ये इसके अंदर ये एक बेल shaped का है. See this one. Okay, which in this one, in this part there will be water. ये वाटर से फिल होता है. छोटा सा टैंक जो दिख रहा है आपको वो वाटर से फिल होता है. ओके, एंड दिस वन the another part, this one will be floating. वो move, it can move in and out, okay, of this small tank which is filled with water. और ये देखिए ये, okay, this is graduated, ये calibrated होता है scale. okay, and ये this one, this is rubber pump, rubber tube है. okay, and ये जो है वो mouth piece है. by from this mouth piece you will be inspiring and expiring air, okay, in the instrument, and according to that this one will move. okay, ये जो ड्रम है वो मूव करेगा and you will be able to see values on this calibrated part. इसके ऊपर calibrated part जो है उसमें आपको values जो है वो दिखाई देंगी. okay, and this one you can record it. इसको हम record कर सकते हैं और अगर आप record करोगे तो it will look somewhat like this. Okay, now come to the static lung volumes and capacities. First one is tidal volume. As I said, volume of air inspired and expired during quiet breathing. मतलब at rest जो respiratory pattern है आपका उसमें कितना volume in and out होता है उसको हम tidal volume बोलते हैं. Okay, normal value is somewhere near 350 to 500 ml approximately. Okay, इतना normal value होता है. Then another one variety is, another type of volume is
inspiratory reserve volume. See the word carefully, inspiratory reserve volume. Okay, तो inspiratory reserve volume, this one. ओके, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मींस एक्स्ट्रा. सी ये लाइन दिख रहा है, राइट? इसका मतलब है एडिशनल. टाइडल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो होता है उसके बाद का जो एक्स्ट्रा, ओके, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल, जो इनहेल कर सकते हैं आप, ओके, बाय मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट. मैक्सिमम टाइडल इंस्पिरेशन हो गया है, ओके, आफ्टर टाइडल इंस्पिरेशन, ये सी दिस वन, दिस इज ओवर, राइट? उसके बाद कितना एक्स्ट्रा आप एयर इंस्पायर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड आफ्टर कंप्लीटिंग नॉर्मल टाइडल इंस्पिरेशन, उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नॉर्मल वैल्यू इज समवेयर नियर 2000 to 3200 ml. ओके, 2000 to 3200 ml. Now next one is expiratory reserve volume. Expiratory reserve volume. Now see here, यहाँ पे टाइडल एक्सपिरेशन जो है वो खत्म हो गया है, राइट? तो इसका मतलब कि टाइडल रेस्पिरेशन के बाद एक्स्ट्रा, ओके, एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना है? एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड, extra volume of air that can be exhaled by maximum forceful expiration after completing tidal expiration. Okay, see, ग्राफ से ही आपको आइडिया आ जाएगा. अगर ये ग्राफ आप रिमेंबर कर लेते हो तो मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. आप समझ भी सकते हैं और उसको इजीली याद भी रख पाओगे, राइट? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब कि टाइडल एक्सपिरेशन के बाद एक्स्ट्रा एफर्ट से आप कितना वॉल्यूम एक्सेल कर सकते हैं. ओके, एक्सपायर आउट द अमाउंट ऑफ एयर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आउट, ओके, दैट इज कोल्ड एज अ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. उसको हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे. नॉर्मल वैल्यू इज 700 to 1200 ml, राइट? सी, स्टैटिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी है तो यूनिट जो है वो ml है. उसमें टाइम के बारे में कुछ भी बात किया हुआ नहीं है. अगर डायनेमिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी होता तो यूनिट में टाइम भी डिस्क्राइब किया हुआ होता, राइट? तो टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के बाद कितना एयर एक्सपायर होता है एक्स्ट्रा एफर्ट से, उसको हम बोलेंगे एंड दैट इज 700 to 1200 ml. Okay, now come to next one, that is inspiratory capacity. See the word carefully, inspiratory capacity. I told you कि भाई कोई भी कैपेसिटी है तो उसको अगर आपको मेजर करना है, इन दैट केस यू सिंपली एड ऑन वैल्यूज जो है, वॉल्यूम्स की जो वैल्यू है, अगर आप उसको एड ऑन करोगे तो आपको कोई भी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इन सब के बारे में आइडिया जो है वो आ जाता है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो है उससे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है? सी दिस इमेज केयरफुली अगेन हियर. अगर इस इमेज को याद रख लेंगे तो ऑलमोस्ट हम सारी चीजें जो है उसको आराम से याद कर सकते हैं. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, सी दिस वन, मतलब कि टाइडल एक्सपिरेशन के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग टाइडल एक्सपिरेशन, टाइडल वॉल्यूम आ गया, उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया. ओके, इट मींस मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग टाइडल एक्सपिरेशन. टाइडल एक्सपिरेशन के बाद जितना भी वॉल्यूम, मतलब कि एक तो टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, उसके बाद का वैल्यू आ जाएगा, मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा. ओके, सो यू कैन कैलकुलेट इट बाय द फॉर्मूला टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. Normal value of inspiratory capacity is 2500 to 3500 ml. ये नॉर्मल वैल्यू है, ओके, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. सी द वर्ड इटसेल्फ सेज, जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है वैसे ही एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है. मतलब कि द वॉल्यूम ऑफ एयर, सी दिस वन, ओके, वॉल्यूम ऑफ एयर
कितना वॉल्यूम जो है आप एक्स्ट्रा आउटपुट कर पाते हैं, ये वाला। ओके, दिस वन। टाइडल एक्सपीरेशन, सॉरी, टाइडल इंस्पिरेशन के बाद मतलब कि टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा। ओके, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग टाइडल इंस्पिरेशन। ओके, तो ये पार्ट आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का पार्ट भी आ जाएगा। ओके, सो इट विल कॉल एज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है इसको, तो हाउ यू विल कैलकुलेट इट? सिंपली एड वैल्यूज ऑफ टाइडल वॉल्यूम with expiratory reserve volume. Okay, so you will have an idea about expiratory capacity. Normal value is somewhere near 1250 to 1600 ml. ओके, ये उसका नॉर्मल वैल्यू है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। सी, वाइटल कैपेसिटी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड, maximum amount of air that can be expired from the lungs after maximum inspiration, deepest. ओके, इसके पहले जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, उसमें हमने क्या बोला था? टाइडल इंस्पिरेशन है या टाइडल एक्सपिरेशन है, राइट? पर वाइटल कैपेसिटी में क्या है? डीपेस्ट इंस्पिरेशन। डीपेस्ट इंस्पिरेशन के बाद मैक्सिमम एक्सपायर्ड कितना एयर आउट कर सकते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको वाइटल कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, so you are supposed to add tidal volume with inspiratory reserve volume and add on expiratory reserve volume. Okay, so simply see, you can see here from the graph itself. Okay, you can see here from the graph itself, this one, tidal volume, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अगर सब कुछ मिलाएंगे, डीपेस्ट इंस्पिरेशन एंड डीपेस्ट एक्सपिरेशन, ओके, तो हमें आइडिया आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी के बारे में। ओके, सो इट विल गिव यू आइडिया अबाउट वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। नाउ व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू? 3200 ml to 4600 ml. This is the normal value. Okay, now come to the different factors. This is very 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 important from MCQ point of view. Factors affecting vital capacity. What are the physiological conditions in which vital capacity get altered? First one is physical dimension. Okay, physical dimension. Vital capacity is more in male. It's more in male as compared to female of same age. Why so? Because male are having large chest size and more muscle power. Okay, and more body surface area. So that is why vital capacity is more. Then age. With old age, vital capacity decreases. Why so? That is because of the decreased loss of the elasticity of the lungs. There will be decrease in the elasticity of lungs. Okay, so vital capacity reduces. Then strength of respiratory muscles. It is important from strength of respiratory muscles also. Okay, higher the strength of respiratory muscle, greater will be the vital capacity. Then effect of posture. Okay, vital capacity, this is very important. Vital capacity is more in standing position. Now why so? Why? What happens when the person stand up? See, now see, in the standing position, what will happen? In standing position, there will be decrease in the venous return. That is because of the peripheral pulling of the blood. Okay, so pulmonary blood flow reduces. Okay, and second thing, there will be also descent of diaphragm, right?
So both of these factors will favor the increase in the vital capacity. It is least in case of lying down position. Why in lying down position? The reason behind that is, in lying down position, diaphragm will get pushed upward, so it will cause more pressure on the chest wall. So in lying down position, there will be decrease in vital capacity. Vital capacity is very much high in case of standing position, and it reduces in case of lying down position. Okay, now come to the next one, that is pathological. Okay, pathological conditions, that is pulmonary fibrosis, respiratory obstruction, emphysema, ascites. All of these conditions will cause decrease in the vital capacity. Now come to the next one, that is functional residual capacity. Understand the word carefully. Functional residual capacity. It can be calculated by the formula residual volume plus expiratory reserve volume. What do we mean by functional residual capacity? Functional residual capacity is volume of air. Volume of air which contained in the lungs at the end expiratory position. At the end expiratory position. Okay, it means after completion of the tidal expiration. Okay, so that is residual capacity. See, word itself says residual. Okay, so it means the volume of the air which stays in the lung, which is there in the lung, volume of the air which is contained in the lung from end expiratory position. So you can calculate it by the formula. Normal value is somewhere near 2.5 liters. Now, what is the significance of functional residual capacity? It maintains the residual volume constant. Okay, it maintains the residual volume constant. Another important thing is it will act as a buffer. Okay, functional residual capacity, it will act as a buffer, and it allows, because from end expiratory position, it allows the somewhat air is still there, right? So it allows continuous exchange of gases even during expiration. Okay, it allows, it will act as a buffer, and it allows continuous exchange of gases even during expiration. Then total lung capacity. Total lung capacity. See, the word itself says total lung capacity. Means volume of air that contained in the lungs after maximal inspiration. Okay. So it can be calculated by, this is important, these all are important formula based question. Total lung capacity can be calculated by the formula vital capacity plus residual volume. Vital capacity plus residual volume. Normal value is somewhere near 6 liters. Okay, somewhere near 6 liters. See this, you can remember this all from the graph. Okay, you can remember this all from the graph. Okay, see, this one is tidal volume, means यहाँ पे tidal respiration हो रहा है. Then inspiratory reserve volume. Okay, this part is expiratory reserve volume. Okay, extra volume, right? ये tidal respiration के बाद की बात है, right? Then inspiratory capacity means ये part, मतलब कि टाइडल वॉल्यूम है और उसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है. देन एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, मतलब ये वाला पार्ट कि जिसमें टाइडल वॉल्यूम है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है. देन वाइटल कैपेसिटी, मतलब सब आ गया उसमें, राइट? टाइडल वॉल्यूम आ गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया, राइट? देन सी दिस वन, दिस इज रेसिडुअल वॉल्यूम, राइट? दिस इज टोटल लंग कैपेसिटी, राइट? टोटल लंग कैपेसिटी आ गया. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, दिस वन, राइट? सो इस, अगर आप एक इमेज याद रखोगे तो यू विल बी एबल टू राइट डाउन एवरीथिंग, राइट?
सी दिस वन, दिस इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो एक इमेज याद रखने से आप सारी चीजें जो है उसको इजीली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली इसका आइडिया आ जाएगा कि भाई इसको एड ऑन करेंगे तो हमको ये वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो एंड इट्स इजी। अगर आप ग्राफ अच्छे से याद रख लोगे तो यू कैन इजीली रिमेम्बर दिस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। Dynamic lung volumes and capacity. Now, as I told you, in dynamic lung volumes and capacities, here time factor is involved. Okay, time factor is involved. So let us go through first one. इसका मतलब है कि इसमें टाइम यूनिट जो है उसमें टाइम भी मेंशन करेंगे, राइट। टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी, अनदर नेम इज फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। Okay, so what we mean by this? See, all these three words are important: rapid, forceful, and complete exhalation. After completing maximum inspiration, rapid, forceful, and as much as complete, okay, exhalation of the air, that is called as a forced vital capacity, or also called as the timed vital capacity. See, this is also asked, what is the difference between forced vital capacity and vital capacity? If when we say, अगर हम लिखें वर्ड सिर्फ vital capacity, इसका मतलब है कि हम स्टैटिक फेज के बारे में, स्टैटिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम फैक्टर का कोई रोल नहीं है। पोस्ट वाइटल कैपेसिटी मतलब कि ये डायनामिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की बात कर रहे हैं और इसमें टाइम फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व है। ओके, सो व्हेन वी से पोस्ट वाइटल कैपेसिटी मींस हम यहाँ पे टाइम फैक्टर जो है उसको कंसीडर करते हैं। सो रैपिड, फोर्सफुल एंड कंप्लीट एक्सहेलेशन आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। Okay, so there are different components. Tidal forced vital capacity या timed vital capacity के तीन component है, FEV1, FEV2 and FEV3. Okay, FEV1, FEV2 and FEV3. Now, how much is FEV1? With the volume of air expired in first second. Okay, that is FEV1. Okay, that is 80% of FVC. 80% of FVC. Then FEV2, forced expiratory vital capacity, that is of the first 2 seconds. Okay, that is of the FVC, that is approximately 95%. And of first 3 seconds of FVC, it is 98 to 100%. Okay, 98 to 100%. FEV1 and FVC, all okay, these are commonly used parameter. Okay, commonly used parameters to find out obstructive and restrictive lung diseases. Okay, see this one, this is normal. Okay, 80%. If this is the forced vital capacity, so in that case, in first second, at least 80% of the air should be exhaled in first second, right? So this is normal. Now, if the person is having obstructive or restrictive lung diseases, in that case, it will be changed. As I told you that FEV1 and FVC, ये जो है, they help to distinguish between obstructive and restrictive lung diseases. Out of this, FEV1 is more sensitive index, right? FEV1, this is very very important. FEV1 is more sensitive index, but it cannot differentiate between the type of the lung diseases, but it will be able to give you idea कि भाई ये obstructive lung disease है कि restrictive lung disease है. Okay, so in case of obstructive lung disease like asthma, what will happen? Inspiration is normal. Okay, obstructive lung disease है तो inspiration जो है वो normal होगा, but expiration obstructive, right? So expiration is obstructed, right? So here what will happen? Vital capacity will be normal. Vital capacity will be normal, but FEV1 reduces. See this? FEV1 reduces.
Vital capacity will be normal but FEV1 reduces. ये obstructive lung disease का pattern है. अगर restrictive lung disease है like pulmonary fibrosis, okay, तो उसमें क्या होगा, chest expansion is restricted, right? So इसमें vital capacity ही reduce हो जाएगा. Okay, this one it will be something like this, पर this will reduce. Okay, but FEV1 will be normal. So by just having idea, see, in obstructive lung disease, vital capacity is normal, but FEV1 reduces. In restrictive lung disease, vital capacity reduces, but FEV1 is normal. So by both of this, you will have an idea कि भाई ये कौन सा disease है, obstructive lung disease है या restrictive lung disease है. Simply FEV1 is highly sensitive indicator, you can say, कि जो आपको distinguish करने में help करता है कि भाई obstructive lung disease है या restrictive lung disease है. So now come to the next one, that is forced expiratory flow during 25 to 75% of expiration. Also write, you can write it as FEF, 25 to 75%. This is a sensitive indicator for small airway diseases. Sensitive indicator for small airway diseases. Normal values in general, you can say approximately 300 liter per minute. 300 liter per minute. Okay. Next one, that is forced expiratory flow during 200 to 1200 ml of expiration. 200 to 1200 ml of expiration. You can write it as FEF, 200 to 1200 ml. Okay. This is mean expiratory flow rate. Mean expiratory flow rate between 200 to 1200 ml segment of FVC. Okay. Mean expiratory flow rate between 200 to 1200 ml segment of FVC. Normal value is somewhere near 350 liters per minute. Okay. 350 liters per minute. Now next one, these all are important formula based questions, right? Minute ventilation, also called as pulmonary ventilation. Okay, it means that volume of air expired or inspired. Volume of air expired or inspired by lungs in 1 minute. See, word itself says, word से आप word समझोगे तो आगे आपको idea आ जाएगा, right? Minute ventilation means ventilation in a minute, right? So it is the volume of air expired and inspired by the lungs in 1 minute. 1 minute में कितनी बार air, कितना amount of air in and out होता है. Okay, so you can calculate it. This is important formula based question. Tidal volume multiply it by respiratory rate per minute. मान लीजिए कि tidal volume जो है वो 400 ml है. ओके, और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 16 पर मिनट है. ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई ये इतना जो है वो पल्मोनरी वेंटिलेशन या मिनट वेंटिलेशन है. नॉर्मल वैल्यू इज समवेयर नियर 6 to 7.5 liters per minute. ओके, 6 to 7.5 liters per minute. Now come to the next one, that is peak expiratory flow rate. See the word carefully, peak expiratory flow rate. Okay, it is the expiratory flow rate during peak of forced vital capacity. Expiratory flow rate during peak of vital capacity. Normal value is near 400 to 450 liters per minute. Then next one,
maximum breathing capacity. See, this is important. Again, a formula based question. Maximum breathing capacity or maximum voluntary ventilation. Maximum breathing capacity or voluntary, see the word carefully, voluntary ventilation, maximum voluntary ventilation. So it means that the volume of air that can be inspired, volume of air that can be inspired and expired, volume of air that can be inspired and expired through lungs in 1 minute by maximum voluntary effort. Word itself says, right? Maximum voluntary ventilation. So volume of air that is inspired inspired and expired by lungs in 1 minute. This is depends on, see, voluntary, right? So it depends on the muscular forces available. It is also dependent on the compliance of the thoracic wall and lungs. Compliance means डिस्टेंसिबिलिटी, कितना डिस्टेंसिबल है चेस्ट वॉल एंड लंग्स, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है. देन इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एयरवे रेजिस्टेंस, एयरवे रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है. नॉर्मल वैल्यू इज नियर 80 to 170 liters per minute. 80 to 170 liters per minute. Okay. So if we look that in which condition pulmonary maximum voluntary ventilation reduces. Okay, so maximum voluntary ventilation will reduce in various pathological conditions like emphysema. Okay, then in case of airway obstruction, agar airway obstruction hai, okay, then also the output of the air is affected, right? In emphysema there will be trapping of the airs. Okay, then in case of poor respiratory muscle strength, poor respiratory muscle strength, right? So in that case all these conditions it is affected, right? That voluntary, this is voluntary ventilation, maximum voluntary ventilation, so it is markedly reduced in the pathological states like emphysema, airway obstruction, poor respiratory muscle strength, as it is much dependent on muscular forces available. Compliance of the thoracic wall and lungs means distensibility of the thoracic wall and lungs and airway resistance, इसके ऊपर ये dependent है. Now next one, that is pulmonary reserve. Pulmonary reserve also called as breathing reserve. Okay, again an important formula based question. Maximum amount of air above pulmonary ventilation which can be breathed in and out of the lungs in 1 minute. Okay, maximum amount of air above pulmonary ventilation which can be breathed in and out of the lungs in 1 minute. So you can calculate it by the formula maximum voluntary ventilation, subtract pulmonary ventilation from this. Okay, so you can have an idea about pulmonary reserve, or you can say breathing reserve. It is usually expressed as the percentage of MVV. Okay, expressed as a percentage of MVV. Okay, so for that you can calculate it by this formula, MVV minus pulmonary ventilation, multiply it by 100 and divide it by maximum voluntary ventilation. This is the formula for to have an idea about percentage of MVV. Okay, called as the percentage pulmonary reserve, also called as dyspneic index, also called as dyspneic index. Normally percentage pulmonary reserve or dyspneic index should be more than or equal to 60 to 70%. It should be 60 to 70%. Usually in normal healthy individual it is 90%. 90% जितना होता है pulmonary reserve. ओके, या बोल सकते हैं ब्रीदिंग रिजर्व.
तो ये इतना, अगर ये 60% से कम है, if it is less than 60%, in that case dyspnea will be present. Okay, so that is percentage pulmonary reserve. Okay, so this is all about today's class. I want to repeat certain important MCQ based, और या बोल सकते हैं जिसको formula based questions जो हैं, I would like to repeat that. You need to remember this. अगर आप ये एक इमेज याद रख लेते हैं, इन दैट केस यू विल बी एबल टू राइट डाउन, आप बहुत सारी चीजें जो है उसको याद रख लिख सकते हैं. ये पार्ट जो है, जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्वाइट ब्रीदिंग बता रहा है, ये टाइडल वॉल्यूम है. ओके, ये अबव टाइडल इंस्पिरेशन. ओके, तो ये रिजर्व हो गया, राइट. सेम वे टाइडल एक्सपिरेशन के बाद एक्स्ट्रा जो है तो वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया. ये दोनों मिला दें, अगर टाइडल वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम को मिला दें तो आपको कैपेसिटी मिल जाएगी, राइट. तो अगर टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिलाओगे तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. अगर टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिलाओगे, ये वाला पार्ट, तो आपको मिल जाएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, राइट. सेम वे अगर आपको वाइटल कैपेसिटी चाहिए तो आपको सारे कंपोनेंट्स मिलाने हैं, सारे रिजर्व वॉल्यूम्स, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है उसको कंबाइन करना है. ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, दैट इन मेल vital capacity is more, in old age vital capacity reduces, and standing position में vital capacity जो है वो maximum होती है. Okay, then what is the importance of functional residual capacity? एक important function है. एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम कांस्टेंट रखता है, दूसरी चीज इट एक्ट्स एज अ बफर, बफर की तरह एक्ट करता है. तो कंटिन्यूअस गैस एक्सचेंज को कंटिन्यू करता है इवन ड्यूरिंग द एक्सपीरेशन. देन डायनेमिक लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी. This is important image. Okay, FEV1 is a sensitive indicator to differentiate between obstructive and restrictive lung diseases. Okay, obstructive lung disease है तो post FEV1 that will be reduced. vital capacity जो है वो normal होगा. अगर restrictive disease है तो vital capacity reduce होगा, लेकिन FEV1 जो है वो normal होगा. ओके, यू कैन हैव अ आइडिया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन या मिनट वेंटिलेशन को बाय द फॉर्मूला टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई इट बाय रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट. एंड देन पल्मोनरी रिजर्व. ओके, पल्मोनरी रिजर्व अगर आप इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ एमबीबी. अगर आप परसेंटेज पल्मोनरी रिजर्व या डिस्प्निक इंडेक्स जो है उसको कैलकुलेट करना चाहते हो, इन दैट केस दिस इज द फॉर्मूला. एमबीबी maximum voluntary ventilation, subtract pulmonary ventilation, then multiply it with 100 and divide it with MBB. ओके, अगर ये 90% से यूजुअली ज्यादा होना चाहिए. ओके, अगर 60% से कम है तो इसका मतलब है कि पर्सन को डिस्पनिया होगा. ओके, डिस्पनिया विल बी प्रेजेंट. ओके, so this is all about lung volumes and capacity. Okay, so this is all about different lung volumes and capacities. If you have any question, you can ask. Okay, so
Stay tuned for the study with Unacademy. Subscribe Unacademy Future Doctors channel and help us to reach to more and more number of students. You can join me for tomorrow's class. The topic is hypoxia at 10 p.m. Okay. Thank you so much.